Good morning, class. In last class, we were discussing about the sampling process of the sampling and the factor affecting the sampling process. So, in that process of the sampling, I told you about the some stages that are included in the process of the sampling. These are the first one is the identify and the defining the target populations. Second one is the describe the accessible populations, specifying the sampling units. Next is the specifying sample selection method, determining the sample size, specifying the sampling plan, and the selecting the desired plan, the desired sample. Next one is the after that I told you about the factor affecting of the sampling process. These are the first one is the nature of the researcher, second one is the nature of the sample, third one is the different circumstances. The nature of the researcher we included about the inexperienced knowledge, inexperienced investigations, lack of interest, lack of honesty, and intensive workload, inadequate supervision. In the nature of the sample, we discussed about the defective sampling frame, sample size, and inappropriate sampling techniques. And in the different circumstances, lack of time, large geographical areas, natural calamities like as the disasters, floods, hurricanes, natural disaster, death, and any different type of the environmental conditions, whatever. So we have discussed in the previous classes. In this class, we will discuss about the type of sampling. Yeah, we can say techniques of the sampling. So sampling is the process of the selecting the representative parts of the populations. यानी कि I in previous class I told you the definition of the sampling. So sampling means the select the representative units from the population. यानी कि select the representative units, group of the objects, individuals, things from any populations. Then it is known as the sampling. So sampling is the presence process of selecting the representative parts from the populations. In this condition, the different types of the techniques are used for the sampling process. So in the there are two types of the techniques sampling की हम जो बात करते हैं classification of the sampling techniques of the sampling. So first one is the probability sampling techniques. Second one is the non-probability sampling techniques. It is classified into the two types. First one is the probability sampling techniques. Second one is the non-probability sampling techniques. So first one is the probability sampling techniques is based on the theory of the probability. जो probability sampling techniques होती हैं, probability means something happen. अगर हम probabilities के बारे में बात करते हैं तो what is happening in the characteristics in the populations, it is known as the probability sampling. So in the probability sampling is based on the theory of probability that involve the random selection of the elements and the subject of the population. यानी कि every subject of the population is having the equal chance to be selected in a study sample. यानी कि in the probability sampling जो techniques है, दो प्रकार की sampling techniques है. First one is the probability, second one is the non-probability. Probability sampling technique is based on the theory of the probability. यानी कि जो probability की sampling techniques है, वो probabilities की जो sampling techniques है, ये probabilities की थ्योरीज के ऊपर बेस्ड होती है. जो probabilities की थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या है, random selection of the subject या random selection of the sample from the target population, then it is known as the probability sampling. So in this condition, every subject has the equal chance for the selecting for the studies, for the research studies. यानी कि जो random probability sampling के अंदर क्या होता है, इसमें जो random sample techniques को यूज किया जाता है, sample selection की random techniques को यूज किया जाता है. In this condition what will happen, every subject is having the equal chance for selecting. यानी कि इसमें जो भी every subject होता है उसको एक equal chance मिलता है for the selection, for the research study. So every subject in the population has the equal chance to the selected as a study sample. Probability sampling, it is known as the probability sampling. Probability sampling techniques is used the representative of the selected sample for the studies whatever. It is known as the
प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी इसकी थ्योरीज के ऊपर बेस होती है। इसमें रैंडम सैंपल सिलेक्शन टेक्निक्स को यूज किया जाता है, जिसके बेस पर एवरी सब्जेक्ट इज हैविंग द इक्वल चांस फॉर सेलेक्टेड इन द रिसर्च स्टडीज। First one. Second one is the non-probability sampling technique. जो non-probability second one is the non-probability sampling techniques. Non-probability जो sampling techniques is the techniques where the sample gathered in a process where which not give all the individual in the population is the equal chance. यानी कि इसमें जो सब्जेक्ट इसमें क्या होता है कि सैंपल आर कलेक्ट गैदर्ड एक प्रोसेस के थ्रू इसमें सैंपलिंग को कलेक्ट किया जाता है, ये सब्जेक्ट को कलेक्ट किया जाता है, सैंपलिंग किया जाता है। फर्स्ट वन। सेकंड वन, और इसमें जो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो भी इंडिविजुअल होते हैं, जो भी थिंग्स होती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, दे आर नॉट हैविंग द इक्वल चांसेस, दे आर नॉट हैविंग द इक्वल चांसेस फॉर द सिलेक्शन। इट इज नोन एज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी में क्या देखा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो टेक्निक्स है, प्रोबेबिलिटीज की थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है, इसका रैंडम सैंपल सिलेक्शन मेथड यूज किया जाता है। सेकंड थर्ड वन इज द इट इज, इसमें क्या होता है जो पॉपुलेशन के अंदर जो एवरी सब्जेक्ट है द इक्वल चांस फॉर द रिसर्च स्टडीज, यानी कि इसमें जो सिलेक्शन फॉर द रिसर्च स्टडी, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो भी सब्जेक्ट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, उनको एक प्रकार से इक्वल चांस मिलता है फॉर द सिलेक्शन एज ए सैंपल इन द रिसर्च स्टडी। लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, इन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स में क्या होता है, सैंपल आर गैदर्ड एज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के थ्रू सैंपल को गैदर्ड किया जाता है। फर्स्ट वन। सेकंड वन इज द व्हेन द इन दिस कंडीशन all the subject, all the individual of the population is not having the equal chance for the research studies। इसमें क्या होता है जो that does not have give the all individual in the population equal chance to be selected in a sample। In other words, in this type of the sampling, every subject not having the equal chance for the selected because the element are choose by choice not by the chance। इसमें जो एलिमेंट होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, उसको चॉइस के अकॉर्डिंग चूज किया जाता है, ना कि चांस के अकॉर्डिंग। तो इस कंडीशन में क्या होता है, every subject is not having the equal chance for the selected sorry। So next one is the probability sampling techniques is further classified into the five types। These are the simple random sampling, second one is the stratified random sampling, third one is the systematic random sampling, cluster and multi-stage random sampling, sequential random sampling। First one is the simple random sampling, second one is the stratified random sampling, third one is the systematic random sampling, next one is the cluster and the multi-stage random sampling, and last one is the sequential random sampling। Next one is the non-probability sampling techniques is classified into the five types। It is the purposive random sampling, second one is the convenient random sampling, third one is the consecutive random sampling, snowball random sampling, or last one is the quota sampling। So we will discuss about the one by one about the each types of the sampling। First one is the, so today we will discuss only about the probability sampling techniques। probability जो sampling techniques I told you, probability जो sampling techniques है, it is based on the theory of the probabilities theory। जो probabilities की theory है उसके ऊपर completely based होती है। first one। second one is the in this condition the जो simple random selection, सिंपल रैंडम सैंपल सिलेक्शन की जो टेक्निक्स है उसको यूज किया जाता है। थर्ड वन, इट दिस probability sampling techniques every subject is having the equal chance for the selected in the research study of the in this condition में क्या होता है, किसी भी population में जो भी subject होते हैं they are having the equal chance for the selection in the research studies। it is classified into the five types: the simple, stratified, systematic, cluster and the multi-stage। first one is the simple random sampling। in the simple random sampling, it is the most pure and the basic probability sample design। in this condition, in this type of the sample design, every member of the population is having the equal chance being selected as a subject। यानी कि किसी भी population में, चाहे वो individual human beings का population है, first one, second one is the human beings का population है, things का है, object का है,
all the subject, all the things are having the equal chance for the selected as a subject for the studies. Second one is the, so in this design, every population member has the equal chance या similar chances to being picked as the subject. The whole process of the sampling is carried out in the, एक ये पूरी जो process है उसको एक single step में conduct किया जाता है. First one. Second one is the uses. इसमें जो different methods हैं मैं इसको previous class में भी आपको पढ़ा चुका हूँ. Simple random sampling technique में सबसे पहले क्या है, coin method है. Second one is the lottery method है. Third one is the computer assisted रैंडम टेक्निक्स है, कंप्यूटर असिस्टेड या यूज ऑफ द कंप्यूटर है. और जो नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ द टेबल इन द रैंडम नंबर्स, यूज ऑफ द टेबल इन द रैंडम नंबर्स. सो दीज आर द सिंपल रैंडम सैंपल टेक्निक्स. सिंपल जो रैंडम सैंपलिंग की टेक्निक्स है इसमें क्या है, एवरी मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन इज हैविंग द इक्वल चांस फॉर सेलेक्टिंग एज ए स्टडी सब्जेक्ट. फर्स्ट वन. सेकंड वन इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द simple random sampling. These are the lottery methods. सबसे बड़े coin method. Third one is the lottery method, coin method, use of the random numbers. And next one is the computer assisted random sampling. Next one is the uses of simple random sampling. So in the uses of the simple random sampling, these are the, first one is population should be used, should be homogeneous. इसमें जो population है वो homogeneous होती है. homogeneous का मतलब ये होता है the population is having the same characteristic. एक ही प्रकार के characteristics सारी populations के बीच में पाई जाती है. Same characteristics population are having, must have the list of the elements और the members. in this condition में क्या है, जो accessible population है उसके elements की list होना चाहिए. Third one is the random जो selection है या तो lottery methods के through होना चाहिए, coin system के through होना चाहिए, या random table के through होना चाहिए, या computer के through होना चाहिए. यानी कि इसकी जो requirements है कि what should be done in the random sampling methods. First one क्या है, जो population should be homogeneous, जो population है homogeneous होना चाहिए. sorry. Second one is the must have the elements कि जो accessible population के जो elements हैं या subject है उनका proper list out होना चाहिए. और इसमें चाहे वो third इसमें जो techniques है चाहे वो random sampling techniques की जो है क्या कहता है lottery methods है, coin system है, जिसमें third one is the computer tables है, या फिर next one we can say the random use of the table in the random numbers है whatever. Next one is the advantages of simple random sampling. First one is the most reliable and unbiased method. सबसे पहले क्या है, first one advantage is the it is very reliable method. This is the one of the, this method is sampling free from the sampling error. ये जो methods है वो sampling error से फ्री होता है, इसमें कोई भी errors नहीं पाए जाते हैं, कोई भी confusion के chances नहीं होते हैं. एक reliable method है. simple error can be easily computed and accuracy. इसमें जो भी simple error होते हैं उनको easily computed किया जा सकता है और उनको easily remove किया जा सकता है. Second one is the disadvantage, expensive and the time consuming procedure है. expensive है, time consuming process होती है, lot of time requirement होता है, lot of procedures are required for done the all these things. It is known as about the simple random sampling method. Second one is the stratified random sampling. Stratified जो random sampling है, if the method is used for the heterogeneous population. Two things are here. सिंपल जो रैंडम सैंपलिंग है, ये सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज की जाती है होमोजेनियस ग्रुप के लिए, और जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है इट इज यूज्ड फॉर द हेटेरोजेनियस ग्रुप के लिए इसको यूज किया जाता है. टू थिंग्स आर हियर. फर्स्ट वन इज द सिंपल रैंडम सैंपलिंग. सिंपल जो रैंडम सैंपलिंग है ये होमोजेनियस ग्रुप के लिए यूज किया जाता है. स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग आर यूज्ड फॉर द होमोजेनियस हेटेरोजेनियस ग्रुप. In this condition, stratified sampling is the probability sampling techniques where the researcher divide the entire population. इस condition में क्या होता है, जो इसको heterogeneous group के लिए यूज किया जाता है तो हर ग्रुप के उस ग्रुप में अलग-अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जेंडर है, एज है, एजुकेशन है. नेक्स्ट वन इज द एज है, जेंडर है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, डायग्नोसिस है, एजुकेशन लेवल है. नेक्स्ट वन इज द जियोग्राफिकल रीजन है, व्हाटएवर. सो अकॉर्डिंग टू दिस इसमें जो रिसर्चर होता है जो पॉपुलेशन है उसको इसमें हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन को यूज किया जाता है. या वी कैन फर्स्ट वन इज इसमें क्या जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में
heterogeneous populations are used. heterogeneous populations क्या होता है, इसके जिस population में different different characteristics पाए जाते हैं, क्या उसमें, तो इस condition में क्या होता है, जो researcher है, रिसर्चर डिवाइड द एंटायर पॉपुलेशन, जो रिसर्चर है पूरी पॉपुलेशन को एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट हेटेरोजेनियस सब ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। हेटेरोजेनियस ग्रुप के अकॉर्डिंग जैसे एज के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बनाया, सेक्स के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बनाया, एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बनाया, रिलीजन के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बनाया, नेक्स्ट वन इज द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बनाया, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग एक ग्रुप बनाया, व्हाटएवर। सो इन दिस कंडीशन researcher in the entire population, the researcher divide the entire population into the different subgroup or the strata, and then the randomly selected the final subject. उसके बाद जो सबग्रुप बनाए जाते हैं उनमें से फिर रैंडम सिलेक्शन किया जाता है। सो इट इज नोन एज द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। द uses of the, so next one is the use of the stratified random sampling. It is used for the heterogeneous populations. Next is the divisions of the heterogeneous population according to the age, sex, according to the age, gender, religion, socio-economic conditions, educations, diagnosis, and the geographical region. Next one is the advantages of stratified random techniques. These are the ensure the representative sample of the heterogeneous population. यानी कि जो सब ग्रुप्स बनाए गए थे उसमें से ये इंश्योर करना है कि जो सैंपल सेलेक्ट किया गया है that sample is represent the subgroup or the entire population or not. So first one is the it ensure the representation of the all group in the population. मान लो एक population के अंदर 10 ग्रुप बनाए गए according एज के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, रिलीजन के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट वन इज द एजुकेशन के अकॉर्डिंग, डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग, व्हाटएवर। फिर क्या होता है, हम उसमें से इसमें से सैंपलिंग किया जाता है। दैट सैंपल रिप्रेजेंट द एंटायर population of that particular subgroup. So next one is the it ensure the representation of